Okay, so in yesterday class, that was the first class of electrochemistry. So we already covered all the basic and important terms, right? Like what is electrochemical cell, what is galvanic cell, what is voltaic cell, how will you represent electrochemical cell through IUPAC? Okay, and we also studied about the various type of reaction taking place at anode and cathode. We also talk about the standard. Voice is not audible. Yeah, I'm audible to everyone. Please confirm once. Everyone, confirm करो एक बार. Yes, Yes, sir. yes, audible, right? ठीक है. So we already study all the important terms in the electrochemical series. What is the function of salt bridge? What is salt bridge? So we cover all this thing. Now from today, like in today class, we are going to see first electrochemical series. What is this electrochemical series? And on the basis of electrochemical series, how will we going to identify which one is a reducing agent, which one is oxidizing agent, which will undergo oxidation fast, which will undergo reduction fast, right? So electrochemical series is a very very important series. ये सीरीज है बेटा जहाँ पे हम लोगों ने इलेक्ट्रॉड को अरेंज किया है एलिमेंट्स को इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू और भी से रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ठीक है फॉर एग्जांपल lithium having the lowest reduction potential value of minus 3.05 volt. Similarly, potassium having minus 2.93 and lead having the maximum that is minus 0.13. Now, तो lead का maximum है क्या? नहीं. लेड के बाद भी है लाइक वी हैव हाइड्रोजन जिसका वैल्यू 0.00 वोल्ट है एंड बिलो हाइड्रोजन ऑल हैविंग पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लाइक वी हैव अ कॉपर वी हैव अ मर्करी वी हैव अ सिल्वर वी हैव अ F2 so these all are positive charge done so we have lithium which having the most negative reduction potential value, and we have a fluorine having the most positive electron reduction potential value, that is plus 2.87. Okay, so this is how we can actually arrange. So जैसे ही आप डाउन द ग्रुप आओगे so ऑक्सीडाइजिंग नेचर विल इंक्रीज डाउन द ग्रुप आने पे क्या बढ़ेगा ऑक्सीडाइजिंग नेचर विल इंक्रीज एंड व्हेन वी मूव अपवर्ड सो आपका क्या बढ़ने वाला है रिड्यूसिंग नेचर सो ऊपर जाने पे रिड्यूसिंग नेचर बढ़ेगा तो नीचे आने पे ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ेगा और ऊपर जाने पे बेटा रिड्यूसिंग नेचर आप लोगों का इंक्रीज होगा डन अब देखो आप मुझे बताओ कि हाउ विल यू सेलेक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट तो फॉर एग्जांपल इफ वी हैव Ag so Ag plus accept one electron right Ag plus accept one electron to form silver so इसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कितना है 0.80 वोल्ट कितना है बेटा 0.80 वोल्ट Similarly, chromium accept 3 electron to form chromium and their reduction potential values are also given minus 0.74 volt. Now, higher the reduction potential, higher the reduction potential, higher will be the tendency to get reduced. यानी जितना रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा होता है हाइयर द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू higher will be the tendency to get reduced and better oxidizing agent. So we can say that silver is a better oxidizing agent. So silver undergo reduction. Similarly, lower the reduction potential, higher will be the tendency to get oxidized. Right? So lower the reduction potential, higher will be the tendency to get oxidized and better reducing agent. So we can say that chromium will undergo oxidation. So chromium क्या होगा? Oxidation undergoes होगा.
तो हमने दोनों वैल्यूज लिखी, सिल्वर का 0.80 एंड क्रोमियम का दिस। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू हाइयर है, हाइयर किसका है? सिल्वर का। तो अगर सिल्वर का हाइयर है तो सिल्वर किसकी तरह काम करेगा यहाँ पे? सिल्वर किसकी तरह काम करेगा? यानी Ag प्लस से Ag कन्वर्ट हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू 0.80 वोल्ट है, यानी हाइयर वैल्यू है। तो हाइयर द रिडक्शन पोटेंशियल, हाइयर विल बी द टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, तो उसकी हाइयर टेंडेंसी है रिड्यूस होने की, एंड एक्ट एज अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। डन, यहां तक जल्दी बताओ। क्लियर है? डन। सर। यस सर। चलो, गुड। नाउ, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल में अब मुझे बताओ बेटा कि उसी तरीके से जितना लोअर रिडक्शन पोटेंशियल होता, उसी हिसाब से आप चेक कर लो। अब मुझे एक क्वेश्चन बताओ, कैन वी स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन सिल्वर वेसल? वैल्यूज देख के बताना। कॉपर के नीचे है सिल्वर। तुम लोग आंसर्स करो पहले, फिर मैं बताता हूँ। यस, एक ने बोला है यस। व्हाट अबाउट अदर्स? यस। ओके, चलो, देखो जरा ध्यान से समझना। सो वी कैन से दैट ना कि यस, ऑब्वियसली आंसर तो यस होगा, बट व्हाई? ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज। हम वैल्यूज के बेसिस पे बोल सकते हैं। सो वी नो ई नॉट ऑफ कॉपर प्लस टू कॉपर इज 0.34 वोल्ट, एंड ई एजी 2 + 2 एजी प्लस 0.80 वोल्ट, राइट? सो ई कॉपर 2 प्लस से कॉपर का कितना है बेटा? प्लस 0.34 वोल्ट, और Ag का कितना है? 0.80 वोल्ट है। अब बोला था क्या कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को सिल्वर वेसल में रख सकते हैं? ऑब्वियसली, बिकॉज सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या है? ज्यादा है। सो इफ द वैल्यू ऑफ सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल इज मोर, और भी इन अदर वर्ड वी कैन से दैट लोअर द रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब ज्यादा जो नेगेटिव है, हाइयर विल बी द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। ठीक है? यानी Ag से ज्यादा रिएक्टिव क्या है? कॉपर है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है ना, वो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है। सो सिल्वर इज अ लेस रिएक्टिव मेटल देन, सिल्वर इज द लेस रिएक्टिव मेटल देन कॉपर। तो बिल्कुल सिल्वर में रख सकते हैं, क्योंकि सिल्वर उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है? तो सिल्वर उसको डिस्प्लेस नहीं करेगा, तो बिल्कुल हम यहाँ पे रख सकते हैं। आया समझ? ठीक है, डन। तो सिल्वर इज लेस रिएक्टिव, thus silver cannot displace copper from its solution and no reaction will occur. So we can store copper sulfate solution in silver vessel. Done? Okay. Now, can we store FeSO4 solution in zinc container? Can we store? No? Yes? Why no? Can anyone tell me? Why no? Because zinc is more reactive metal than Fe. Because Fe having the value of reduction potential minus 0.44 volt,
and zinc having the reduction potential value minus 0.76 volt. Huh? So we can say that now कि zinc is more negative. So if the zinc is more negative, then what happened? So if the zinc is more negative reduction potential value, it means इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि this can react with Fe, है ना? इसीलिए we cannot store FeSO4 in zinc container. Done. Now another question we have. So given the standard electrode potential is given, that is ECU plus 2 Cu, EZn plus 2 Zn, EFe2 to Fe, E chromium to chromium, right? You have to arrange this metal in the increasing order of their oxidizing power. तो हमने बोला था नीचे आओगे पॉजिटिव होगा वैल्यू तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगा, ऊपर जाओगे तो रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगा. नाउ यू हैव टू अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर. फटाफट, विद इन 2 minutes यू ऑल यू नीड टू अरेंज, फटाफट जल्दी करो. मैं नाम लिख दूं आसानी के लिए. चलो, मैं पहले वाले को बोल रहा हूँ ए, नेक्स्ट वाले को मैंने बोला बी, फिर मैंने बोला सी, और फिर बोला डी. बताओ, ए बी सी डी, यू हैव टू अरेंज द ए बी सी डी फर्स्ट in the oxidizing nature. बताओ. बेटा अरेंज करो सभी. Electron reduction potential values are given. You have to arrange this metal in the increasing order of their oxidizing power. So क्या पढ़ा था? हाइड्रोजन जीरो, इसके ऊपर सारा नेगेटिव, और हाइड्रोजन के ऊपर सारा पॉजिटिव. तो अगर नीचे आते थे तो ऑक्सीडाइजिंग, और ऊपर जाते थे तो रिड्यूसिंग. नो, जो जितना नेगेटिव होगा वो उतना ज्यादा रिड्यूसिंग, जो जितना पॉजिटिव होगा उतना ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग. वेणुगोपाल CDBA, and Kiran BDCA, Avinash ACDA. Everyone giving the different answers. Why? It's a very simple thing. DBCA, CDBA, BDCA. Why? Okay, let's look at very carefully. Right. So the most negative value here is for what? That is minus 0.76 volt for zinc. So zinc is a less oxidizing power, right? So we know the higher the electrode potential, higher will be the oxidizing power, obviously. So zinc having more negative, it means it is a lesser oxidizing power. Then comes chromium, right? Yani we have B, then comes D, then comes C, then comes A. So the correct order is like ACDB. Hmm? ACDB. They are saying in the increasing order now. So increasing order you can say B से ज्यादा D, D से ज्यादा C, C से ज्यादा A. So this is the increasing order BDCA. So those जिन्होंने BDCA बोला, they are absolutely correct. Venugopal BDCA, very good. And the next one ACDB. No बेटा, BDCA, BDCA. किरण ने सही बोला, very good. And HP and yeah. सो इन बच्चों ने बिल्कुल सही बोला है, BDCA.
So this is the correct way. Is this clear to everyone? कंफर्म करो एक बार. समझ आया सबको? चलो, very good. Now, now we move to how to calculate the cell potential. Okay, so let's see हम cell potential कैसे निकालेंगे. So basically we know the reaction at anode. Anode पे क्या reaction हो रहा था? That is zinc. Zinc loses 2 electron. Anode पे convert हुआ और 2 इलेक्ट्रॉन को lose किया. Right. So zinc loses electron. That's why they are known as oxidation. At cathode, similarly, copper gain this 2 electron, right? So this is the reduction potential of copper. So what is the overall reaction? So overall reaction is like zinc plus copper plus 2 gives us Zn plus 2 and copper solid. Or we say in IUPAC notation, we can represent anode half, salt bridge, and cathode half. The anode half is what? Zn to Zn plus 2. Bridge, then Cu plus 2 to Cu, and their concentrations, right? So how will you calculate E naught cell? So standard EMF of the cell, or we say cell potential. तो we calculate cell potential by कैसे निकाल सकते हैं? बताओ. किसका? जैसे कैथोड का क्या हुआ? रिडक्शन पोटेंशियल. तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ले लो. E naught of reduction potential of cathode प्लस ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड. बिकॉज ऑक्सीडेशन हो रहा है हम लोगों का जिंक का. तो कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ले लो और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू ले लो. नाउ ई ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई रिडक्शन. यानी जो ई ऑक्सीडेशन का वैल्यू होता है वो जस्ट नेगेटिव साइन ई रिडक्शन के इक्वल होता है. सो वी कैन ऑल्सो पुट नाउ ई कैथोड और ई एनोड की जगह क्या पुट कर दिया? ई एनोड की जगह माइनस ऑफ ई रिडक्शन, यानी ई जेड एन प्लस टू टू जेड एन. यहाँ पे देखो, लुक एट केयरफुली. दिस इज जेड एन टू जेड एन प्लस टू मीन्स ऑक्सीडेशन. इसी का उल्टा कर दिया. जेड एन प्लस टू जेड एन दैट इज रिडक्शन. तो ये रिडक्शन पोटेंशियल लिख दिया. तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट सी यू प्लस टू सी यू प्लस ई नॉट जेड एन प्लस टू ऑक्सीडेशन. और ये ई सेल निकाल लिया हम लोगों ने. राइट. सो ये वैल्यू कितनी आ गई? ई नॉट ऑफ कैथोड राइट हैंड साइड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड दैट इज लेफ्ट हैंड साइड. सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल. सबको क्लियर हुआ ईएमएफ ऑफ द सेल का फॉर्मूला? एवरीवन गॉट इट? टेल मी फास्ट. Is this clear to everyone now? How to find EMF of the cell? Please confirm beta once fast. Yes, Rajat. Rajat Patidar. Okay. Tell once again, sir. Okay, Kiran, I'm just saying you have to calculate the cell potential. Okay, so the formula for calculating cell potential is nothing but total EMF of the cell is E cathode plus E anode. Right, this is the cathode. कैथोड पे क्या था? कॉपर. तो कॉपर पे क्या हो रहा है? रिडक्शन. तो दिस इज द रिडक्शन पोटेंशियल. तो रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड. इफ यू कैन ऐड दिस टू ईएमएफ then you get the cell potential. पूरे बैटरी का ईएमएफ निकल जाएगा. Now, we can also write E oxidation as minus of E reduction. So instead of taking two different, like one oxidation, one reduction, we can take only one reduction value for all, right? Like here the reduction of copper takes place, copper plus 2 to copper. और यहाँ पे जिंक को कैसे लिख दोगे? Zn plus 2 to Zn. बिकॉज Zn से Zn plus 2 ऑक्सीडेशन था, तो उसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? Zn plus 2 to Zn, दैट इज रिडक्शन. तो ये क्या आ गया? दैट इज कैथोड एंड दिस इज एनोड. So E naught of cathode minus E naught of anode. This is the formula for calculating standard EMF of the cell. Done?
चलो, सो लेट अस अज्यूम, मुझे जल्दी से बताओ इसका वैल्यू कितना आएगा फास्ट, टेल मी। if the reduction potential of zinc is given minus 0.76 volt, and the reduction potential of copper is also given, that is plus 34 volt, so which one is cathode and which one is anode? Always remember beta, यहाँ तो सिंपल है, कॉपर कैथोड पे है, जिंक एनोड पे है। वैसे भी याद क्या रखना है, दोज हैविंग द मोर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा होता है वो क्या कहलाएगा, कैथोड। और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम होगा वो क्या कहलाएगा, एनोड। तो यहाँ पे ज्यादा किसका है, कॉपर का, दैट इज कॉपर +2.34। और कम किसका है, जिंक का, दैट इज -0.76 वोल्ट। तो क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। कितना आंसर आया, 1.10, very good, good. So that is 1.10 volt, very good बेटा। ठीक है, यानी फॉर द वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल, ई सेल मस्ट बी पॉजिटिव, ई सेल क्या आना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, वर्किंग ऑफ द सेल। गुड। Now, let's see the feasibility of a reaction. How will you identify whether the reaction takes place or not? What is the formula for finding the feasibility? So, the feasibility of reaction, that is delta G is equal to minus NF E naught cell. What is the formula of delta G? Minus NF E naught cell. So, minus NF E naught cell. This is the formula for finding delta G. It means gives free energy of a cell reaction. Okay. Now, what is N here? N is the moles of electron exchange. What is F here? That is the Faraday constant. What is E naught cell? That is the EMF of the cell. Okay. So, delta G means gives free energy of a cell reaction. N means moles of electron. F means Faraday constant. And E naught cell means EMF of the cell. Right. So, this is how we can find the delta G of a reaction. Done. Now, if E naught cell is greater than 0, if E naught cell is greater than 0, then in such case delta G is less than 0. Obviously, देखो, अगर E cell की वैल्यू पॉजिटिव है ना, अगर E cell की वैल्यू पॉजिटिव है तो डेल्टा जी क्या आएगा, नेगेटिव, बिकॉज ऑलरेडी फॉर्मूले में एक नेगेटिव है। तो अगर ई सेल पॉजिटिव है तो डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, और जो सेल है वो स्पोंटेनियस वर्क करेगा। सेल कैसे काम करेगा, स्पोंटेनियस। अगर ई सेल की वैल्यू 0 से कम हो गई, इफ द ई सेल वैल्यू इज लेस देन 0, देन क्या होगा, देन डेल्टा जी ऑफ सेल ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। डेल्टा जी नॉट सेल ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, और ये हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। एंड इफ द ई सेल एंड डेल्टा जी बोथ आर 0, देन द सेल इज इन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहलाएगी। तो फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शंस के लिए आपको ये डेफिनेशन फॉर्मूला याद रखना है, delta G is equal to minus NF E naught cell. And by using this formula, we'll calculate the feasibility of a reaction. Done? Is this clear to everyone? बता दो एक बार, fast. Done? हो गया, चलो नेक्स्ट। एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, सभी बताएंगे। यू हैव टू कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग गैल्वेनिक सेल। तो जल्दी से सेल पोटेंशियल निकालो, वही कैथोड माइनस एनोड करके निकालना है। तो जल्दी से सभी लोग।
ई सेल निकाल के बताओ। यू हैव 2 मिनट्स, फटाफट सॉल्व करो। ई सेल की वैल्यूज निकालनी है, सबका रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। जस्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई सेल फास्ट, एवरीवन। निकालो भाई वैल्यूज, फास्ट जल्दी से। निकला किसी का? यस एवरीवन नीड टू फाइंड द वैल्यू, सिंपल वैल्यूज है बहुत। 1.56 पहले वाले का। ठीक है। नाउ व्हाट फॉर द अदर्स, बाकी भी बताओ। 1.56, 0.10, 0.68 वेणुगोपाल। ओके, चलो तो चेक कर ले फटाफट। So first one is for the zinc one, right? So we know the reduction potential of zinc minus 0.76 volt, and for silver it is given plus 0.80. So cathode act as silver, so 0.80 minus minus you get plus, so 1.56 volt. Very good. The next for Fe and copper. Copper having the positive electrode potential value, that is 0.34 volt, minus minus again plus, so it is 0.78 volt, right? नेक्स्ट फॉर AU इट कम्स आउट टू बी 2.16। बेटा अलग आया था आप लोगों का तो। वाई? Venugopal, first one is correct, but what about the second one? Its value is 0.10, point not 0.10, bhai. The value is, we know for copper plus 2 it is 0.34 volt. So 0.34 volt minus and minus 0.44 volt. It is 0.78 volt comes out to be. Done? Yes, 0.78 volt is correct. Now, for AU and chromium minus 2.16, is this clear? ये समझ आया क्या सबको? जल्दी बोलो एक बार। गुड। चलो, गुड। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्या पूछा है इस क्वेश्चन में? जरा दिमाग लगाना। दे आर सेइंग, अगर कॉपर दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कॉपर बना रहा है, एन इवन इज गिवन। सिमिलरली, कॉपर दो
से एक इलेक्ट्रॉन लेके एक पे जा रहा है, E2 इज गिवन। नाउ व्हाट इज द ई नॉट फॉर कॉपर प्लस टू कॉपर? ठीक है, कॉपर प्लस से कॉपर के लिए क्या होगा? क्वेश्चन समझे? कॉपर प्लस टू में था, उसने दो इलेक्ट्रॉन गेन किया, कॉपर बना, उसके लिए E1 गिवन है। फिर कॉपर प्लस टू पे था, उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, कॉपर प्लस वन पे पहुंचा। अब कॉपर प्लस वन एक इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बनाएगा, उसके लिए ईएमएफ का वैल्यू क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E3? ये पूछा है। तो हम यहाँ पे डेल्टा जी को यूज करेंगे। कैसे, वो देखो एक बार। तो डेल्टा G1 is equal to minus NFE1, and similar for the second reaction, we can use delta G2 is equal to minus N2F into E2. Now, अगर आप इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या होगा? दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो, अगर दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो, कॉपर प्लस टू ई प्लस कॉपर एंड कॉपर प्लस टू प्लस इस कॉपर, तो क्या आएगा? ऑब्वियसली कॉपर टू गेट कैंसिल, ये आ जाएगा कॉपर प्लस से कॉपर तक जाना है आपको। यानी डेल्टा जी जो आएगा वो आएगा G1 - G2, G1 - G2। इट मीन्स वी कैन राइट नाउ minus NF E naught cell is equal to minus N1 F E1 minus of minus N2 F E2। यस, ओके। सो सभी वैल्यूज को पुट करो यहाँ पे, एफ एफ गेट कैंसिल्ड, सो द वैल्यूज कम्स आउट टू बी 0.521 वोल्ट। समझ आया सबको ये कैसे हुआ? यस, रिपीट, ओके। मैं ये बता रहा हूँ बेटा, जस्ट कि लेट अस assume if the copper plus 2 accept 2 electron and become copper, their electrode potential values are given. If copper plus 2 accept 1 electron only, then they become copper plus 1. Their value is also given. Now they are asking what happened when the copper which is in plus 1 state accept 1 electron to become copper. तो इसके लिए मुझे E नॉट सेल निकालना है। सो हमने एक फॉर्मूला यूज किया पहले, ये इसके लिए बोला डेल्टा G1। तो G1 इज इक्वल टू क्या? G इज इक्वल टू NFE, so that is N1 F और E1। Similarly for this equation we have a N2 F and E naught 2। नाउ अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं, दैट इज कॉपर प्लस टू, टू इलेक्ट्रॉन्स गिव्स अस कॉपर, एंड एक और क्या है बेटा, कॉपर प्लस टू एंड इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर प्लस। अब इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो प्लस माइनस 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 कैसे होगा? दिस गेट कैंसिल, दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन गया, एक इलेक्ट्रॉन, एंड ये क्या हुआ? बोलो, ये दोनों जुड़ जाएगा, सो दैट इज कॉपर कॉपर प्लस। सो क्या आ गया? ये कॉपर प्लस, और ये नेगेटिव का हो गया कॉपर। हम्म, सो नेगेटिव का कॉपर प्लस, सो दैट कॉपर प्लस एंड वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कॉपर। यही आ रहा है ना? यही तो चाहिए था। तो इसके लिए क्या किया, डेल्टा जी इज इक्वल टू G1 - G2। G1 और G2 दोनों की वैल्यू पुट कर दिया। N1 हमें पता है क्या? N1 गिवन है, N1 पता है, यहाँ पे टू का ट्रांसफर हो रहा है, एक में एक का ट्रांसफर हो रहा है, तो 2 × 1, देयर ई सेल इज ऑल्सो गिवन और N इज ऑल्सो गिवन। बस वैल्यू को पुट किया, यूल गेट द ई नॉट वैल्यू। डन। नाउ इज दिस क्लियर? यस। N1 and N2, बेटा देखो, हाउ टू फाइंड N1 and N2? दिस इज N1 now, so in such case how many electrons copper accept? Two electrons, so N1 is equal to 2. In this, how much electron copper accept? One electron. So N2 is equal to 1. So this is how we can find N1 and N2. Got it?
डन। नाउ एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर Sn+4 to Sn+2 couple is given 0.15 volt, and that for chromium plus 3 minus 0.74 volt. These two couple in their standard state are connected to make a cell. Now, then calculate the cell potential. कैसे लिखेंगे हम लोग? We know ESn+4 to Sn+4 given, and that for chromium plus 3 to chromium is also given. Now, which one is act as anode and which one is act as cathode? मैंने पहले ही बताया था जिसका वैल्यू ज्यादा होगा। हम्म तो their electrode potential is more now, so they act as a cathode. Their electrode potential is less, so they act as a anode. So जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो कैथोड की तरह काम करता है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो एनोड की तरह काम करता है। सो कैथोड एनोड पता लग गया। बनाया कैथोड एनोड एंड विल गेट द वैल्यू। नोट करो फटाफट। हम्म सो व्हाट इज द समरी? समरी देख लो एक बार फटाफट। हमने क्या क्या निपटा दिया, क्या क्या पढ़ लिया पूरा। डन। सो द समरी इज, गैल्वेनिक सेल हमने पढ़ा। व्हाट इज गैल्वेनिक सेल? सो गैल्वेनिक सेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी ऑफ द स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एंड जस्ट इसके अपोजिट क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल को हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, अभी हमने सिर्फ गैल्वेनिक सेल पढ़ा है पूरा। सो इलेक्ट्रोलिटिक से इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड टू कैरी आउट अ नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। Higher the reduction potential, higher will be the tendency to substance to get reduced. And lower the reduction potential, higher will be the tendency of substance to get oxidized. Similarly, lower reduction potential matlab more negative, higher will be the reactivity of the metal. And we know the formula how to calculate E cell, that is E cathode minus E anode. And delta G is equal to minus NF of E naught cell. So ये हमने सारे questions कर लिए. From next class, we are going to start with the Nernst equation, right? So till you're able to solve these questions, okay? NCERT in text में आप 1, 2, 3 क्वेश्चन कर सकते हो, एंड क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 6 कर सकते हो एनसीईआरटी एक्सरसाइज से। So ये सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो अभी के लिए। From the next class, we are going to start with the Nernst equation. Till if anyone having any kind of doubt, you can ask. कोई भी डाउट अभी तक आया हो तो पूछ सकते हो। यस, कोई भी डाउट बेटा। Yes, beta, NCERT questions. Spontaneous means the reaction which takes place by its own. There is no external an agent or external force need to be required for the reaction to be takes place. The spontaneous reaction जो continuous अपने आप होता रहता है बेटा, ठीक है? That is called spontaneous reaction. NCERT questions बेटा, exercise question या पहले वो करो, उसके बाद एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करो, फिर आपको मंथली टेस्ट मिलेगा, फिर आप जेई नेट के पीवाई क्यूज हम डिस्कस करेंगे, फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे 1 by 1 स्टेप जाना है, ठीक है? फर्स्ट ट्राई टू कवर एनसीईआरटी एक्सरसाइज, देन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, देन पीवाई क्यूज, देन गो फॉर द different different kinds of question as well, mock papers and all this thing. Done. So thank you all, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, वहां हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, राइट? थैंक यू ऑल।